Hello friends, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for standard 9th, and in this video I am going to explain you the fourth lesson of yours, that is, have you thought of the verb have. And in this video I am going to explain its workshop, and if you have any doubt you can comment and ask me, and guys please like and subscribe my channel. So let's start with the workshop. So here our lesson. Have you thought of the verb have? So basically ये lesson grammar से related है ही, and it is very simple and short. And आपको इसमें have के uses के बारे में बताया है कि हम have का uses as helping verb, as auxiliary verb तो करते ही हैं, और हम tenses वगैरह में भी उसका use करते हैं, मीन्स रिलेटेड टू ग्रामर. बट जब हम उसका यूज़ कोई भी सेंटेंस में जब मेन वर्ब के तौर पे करते हैं, मीन्स मेन वर्ब का दूसरा मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्ड ही होता है, जब एक इंपॉर्टेंट वर्ड की तरह हम उसको यूज़ करते हैं, सो उसके एग्जांपल्स मीन्स उसके केसेस वो बहुत सारे केसेस में यूज़ होता है. सो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं and it is only related to that. So we will start with the workshop now. Okay, so here is our workshop. The first question is, add your own sentences to those given in the passage to illustrate the uses of have. So आपके पैसेज में जैसे कि ये सारे यूजेस दिए हुए हैं एंड उसके एग्जांपल्स भी शो किए हैं, सो आपको अपने खुद के ओन सेंटेंसेस में ये यूजेस के एग्जांपल्स लिखने हैं. सो फर्स्ट इज to show positions. So I will show you from my book to show position. The first example is, I have the textbook. Didn't you have long hair? So मैं यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल लिख के दे रही हूँ, आप इसके अलावा भी लिख सकते हो. To indicate relationship, do you have client named Peters? Don't you have any sibling? Third is to refer to eating और ड्रिंकिंग. सो जब आप हैव का यूज़, आपको यहाँ पर हैव का यूज़ कर कर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एक्टिविटीज़ को बताना है. आई विल ओनली हैव डेजर्ट फॉर डिनर. द डिशेज आई हैव टुडे आर सो डिलिशियस. ओके, नाउ मूव टू द फोर्थ वन, दैट इज टू शो ओनरशिप. मीरा हैड अ ब्यूटिफुल ब्लू शिफॉन ड्रेसेस. डज ही हैव अ रेड कार? Fifth is to refer to events, activities and experiences. So यहाँ पर आपको events, activities and experience लेकर आपको show करना है. So I went to a few parties and had a good time. Let's have a party. Sixth is to refer to a physical condition. I have stomach ache. She have been very thin from her childhood. सो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स और उसके एग्जांपल्स बता दिए हैं, एंड आई सजेस्ट कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें जो आपको फ्यूचर रेफरेंस में हेल्प होगा. सो विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज लुक अप द फॉलोइंग वर्ब्स इन अ गुड डिक्शनरी. List at least 20 different uses each. You may include their use with different preposition, adverbs and in idioms. So आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर बहुत सारे वर्ब्स दिए हुए हैं. आपको एक डिक्शनरीज का यूज़ करके इसके 20 डिफरेंट यूजेस को बताना है. जैसे यहाँ पर हैव के बताए हैं वैसे ही 20, और आप इसमें अपने एग्जाम्पल शो कर सकते हो. आप यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ करके बता सकते हो, एडवर्ब्स. और इडोम्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिसके लिटरली जिसका लिटरली मीनिंग दूसरा होता है, बट आप जब उसको रीड करोगे तो आपको उसका मीनिंग दूसरा रहेगा, बट उसकी डीप मीनिंग होती है. ओके, सो फर्स्ट इज गो. सो आई विल शो यू दी यूजेस, एंड मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 ही यूजेस बताए हैं सबको, एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके बाकी यूजेस खुद सर्च करें. आप एक अच्छी डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हो इसके यूजेस निकालने के लिए, एंड आपको ईजिली मिल भी जाएंगे. सो फर्स्ट इज़ to indicate movement from one place to another. The example is, I need to go to work. Simon, go back. Second uses is to show departure. Let's go on a road trip. I have to go or else I will be late. To attend or visit a place. I go to the gym every day.
She went to Australia for higher studies. To show a future intention. I am going to win the marathon. She is going to become the next mayor. Okay, and here I am using the phrases, other phrases and idioms. Go all the way, go easy, go full circle, on the go beyond. So these are the phrases or idioms. So we'll see the next one, that is get. So the second is get. To receive or obtain. Okay, the first usage is to receive or obtain. I got a letter from David. This room gets very little sunshine. To go to a place and bring back. It is ye to go to a place and bring back. Okay. Somebody get a doctor. Get a drink for John. To show illness. He got a leg injury. She got really bad headache. To indicate movement or travel. He got down from the ladder. The bridge was destroyed, so we couldn't get across the river. Other phrases or idioms are get off, get away, get by, get on, get round. So third is put, to indicate place or position. Put the cases down there, please. Did you put sugar in my coffee? To show state or condition. I was put in charge of the office. It was time to put their suggestions into practice. To indicate effect. Her new job has put a great strain on her. They put pressure on her to resign. To show value. She put a limit on the amount we could spend. शी पुट हर इन द टॉप रैंक ऑफ नोवेलिस्ट. सो मैं आपके लिए यहाँ पर रीड कर देती हूँ, थोड़ा स्प्लिट हो गया है, सॉरी फॉर दैट. ही पुट, इट इज़ PUT पुट अ लिमिट ऑन द अमाउंट वी कुड स्पेंड. शी पुट हर इन द टॉप, इट इज़ TOP टॉप रैंक ऑफ नोवेलिस्ट. Other phrases or idioms are put one, put down, it is DOW and down. Put back, it is BACK, back. Okay. Now we'll see the fourth one. So fourth is catch. First use is to capture person or animal. Our cat is hopeless at catching mice. How many fishes did you catch? To discover something. She caught herself wondering whether she had made mistake. Thieves caught in the act. To show visibility. Let's eat now and maybe we could catch a movie later. I catch him telling a lie about the incident. To be in time. I caught him just as he was leaving the building. I was hoping to catch you at home. Other phrases or idioms are catch up, catch your breath, catch up with. The last is pass, to indicate movement. The road was so narrow, the cars are unable to pass. She passed me in the street without even saying hello. To pass something. Pass the salt, please. Pass that book over. To show change. She had passed from childhood to early womanhood. Time had passed from ancient to modern. To achieve the exam or test. She had not passed her driving test yet. The examiners passed all the candidates. Other phrases are passes by, pass away, pass down, pass out, pass off. Okay, so we are done with all our activities, and thank you for watching. Keep learning with me. Stay home, stay safe.